गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भारतीय ऑनलाइन क्लास में मैं हिमांशु शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे बैक्टीरियल डिजीज, जिसमें हमने 11 बैक्टीरियल डिजीज कंप्लीट कर लिए थे। वहाँ पर अपना चैप्टर का जो इंट्रो शुरू किया था हमने, उस इंट्रो के अंदर जो डिजीज का ए सेक्शन था वो कंप्लीट हो गया बैक्टीरियल डिजीज का। अब हम शुरू कर रहे हैं बी। बी सेक्शन है अपना वायरल। डिजीज बेसिकली अपने सिलेबस में 8 वायरल डिजीज है और उन 8 वायरल डिजीज को वही सिस्टम बना वही है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वही डिजीज का नेम तो दिया हुआ रहेगा, फिर उसका पैथोजन, फिर सिम्टम्स हैं, फिर उसका सिम्टम्स में इफेक्टेड ऑर्गन्स होगा, उसके बाद में उसका प्रिकॉशन है और प्रिकॉशन के बाद में उसका ट्रीटमेंट है। तो फिर बात करते हैं इसमें प्रिकॉशन की। तो इसका जो प्रिकॉशन है वो है जो इसके इन्फेक्शन के रीजन्स होते हैं उनको अवॉइड करना, उनसे अपने आप को सेपरेट करके इससे प्रिकॉट हो सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे इंजेक्शन की अगर रिक्वायर होती है किसी ह्यूमन बीइंग को, तो उसे हमेशा क्लियर एंड स्टरलाइज नीडल का ही यूज करना चाहिए, डिस्पोजल वेन का ही यूज करना चाहिए। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेडिकल स्टाफ की और पर्टिकुलर पेशेंट की कि उसको हमेशा कौन सी स्टरलाइज्ड और डिस्पोजल नीडल का ही यूज उसको करना चाहिए। जितने भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे टाइम टू टाइम कैसे होने चाहिए, उनको स्टरलाइज करना चाहिए, ये रिक्वायर होती है। उसके बाद में ब्लड हमेशा जो रजिस्टर्ड ब्लड बैंक है उनसे ही ब्लड को क्या करना चाहिए, परचेज करना चाहिए या उसी से ट्रांसफ्यूजन करवाना चाहिए। फिर बात करते हैं कि जो सेक्सुअल प्रोसेस होती है, सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, वो केवल अपने पार्टनर के साथ में ही होना चाहिए। उसके बाद में जितने भी ड्रग मेडिसिन होती है इनका यूज नहीं करना, ये बहुत डेंजरस होती है। अगर कोई पॉजिटिव लेडी होती है तो उसको प्रेगनेंसी उसको अवॉइड करना चाहिए। ये वो रीजन्स हैं जिनसे इससे प्रिकॉशन कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, प्रिकॉशन इसका ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, अब करते हैं इसके डायग्नोसिस की बात। डायग्नोसिस एक्चुअल में HIV का जो डायग्नोसिस होता है वो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते। रीजन क्या होता है, क्योंकि सिम्टम जरूरी नहीं कि आज ही शो ऑफ हो जाए। डायग्नोसिस करने के लिए जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके ब्लड का और या फिर उसके फ्लूइड का टेस्ट करना होता है और उसी से इसके डायग्नोसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो सकती है। अगर इसके सिम्टम्स की बात करके करेंगे तो उससे डायग्नोसिस पॉसिबिलिटी नहीं होती है। रीजन, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के अंदर या पेशेंट के अंदर वो सिम्टम्स शो हो ये कोई श्योरिटी नहीं है, वो सिम्टम्स लॉन्ग ड्यूरेशन तक शो ऑफ नहीं होता। एक चीज देखिए आप इधर कि सपोज करो कि ये कोई ह्यूमन बीइंग है, इसमें आज इन्फेक्शन हुआ है और यहां से लेकर ये जो टाइम ड्यूरेशन है यहां इसमें सिम्टम जनरेट हुए हैं, यहां पर सिम्टम जनरेट हुए हैं, यहां इन्फेक्शन हुआ था। सपोज करो ये और इसके बीच का जो ड्यूरेशन है वो 3 ईयर है, तो 3 ईयर तक डायग्नोसिस सिम्टम बेस पर नहीं कर सकते, तो उसके लिए इसका ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। तो ये जो पीरियड होता है इसको बोलते हैं विंडो पीरियड। इसको बोलते हैं विंडो पीरियड। तो इस विंडो पीरियड के अंदर उसमें किसी भी टाइप का कोई सिम्टम शो ऑफ नहीं होता, तो ये इस टाइम पर दूसरे लोगों को जो दूसरे फिजिकली हेल्दी पर्सन है उनमें वो डिजीज को क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा। इसीलिए इसका जो डायग्नोसिस होता है वो ब्लड और फ्लूइड के टेस्टिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसके जो बेसिक डायग्नोसिस है वो बता रहा हूँ आपको। तो सबसे फर्स्ट होता है वो होता है एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट के लिए
HIV किट होता है जिसमें HIV एंटीजन प्रेजेंट होता है। तो उस HIV एंटीजन के साथ में अगर ब्लड सैंपल की प्रोसेस करवाई जाती है तो अगर उसमें वायरस प्रेजेंट होता है तो एंटीजन के ऑपोजिट रिएक्शन शो करता है, तो उसकी प्रेजेंटेशन के बेसिस के ऊपर ही डायग्नोसिस कंफर्मेशन होती है। जो एलिसा है इसकी फुल फॉर्म पूछता है एग्जाम में, तो एलिसा का फुल फॉर्म होता है ई मतलब एंजाइम, एल मतलब लिंक्ड, आई मतलब इम्यूनो, एस मतलब सॉर्बेंट और ए मतलब एसिड। एंजाइम, लिंक्ड, इम्यूनो, सॉर्बेंट, एसिड, तो ये है एलिसा टेस्ट। सेकंड टेस्ट होता है इसका, वो होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, ये टेस्ट ज्यादा इफेक्टिवली मानते हैं, रीजन चीप है और ड्यूरेशन इसमें कम लगता है, टाइम ड्यूरेशन इसमें शॉर्ट है, इसीलिए ज्यादातर इसी टेस्ट का यूज होता है। ठीक है, तो ये थे इसके दो डायग्नोसिस जो अपन ने देख लिए। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। हाँ, ट्रीटमेंट HIV का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसका प्रिकॉशन ही इसका ट्रीटमेंट है। अब तक कोई भी परमानेंट इसके लिए मेडिसिन न तो प्रोड्यूस हुई है और न कोई पॉसिबिलिटी इसकी लग रही है। कुछ मेडिसिन फिर भी इसके लिए प्रोड्यूस की गई है जिनमें 100% कोई भी श्योरली नहीं है जो इफेक्ट जनरेट करे। तो इन फिर भी जो मेडिसिन अवेलेबल है उन मेडिसिन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट है AZT, एजेडोथाइमिडीन, AZT, एजेडोथाइमिडीन। एजेडोथाइमिडीन इसमें सबसे ज्यादा यूज होती है। उसके बाद में फॉस्फोकोनेट, डाइडिऑक्सीसाइटिडीन, फिर उसके बाद में D40 यानी स्टेबुडिन। ये कुछ ऐसी मेडिसिन है जो T4 सेल्स को डिस्ट्रॉय होने के रेट को वीक कर देती है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, एजेडोथाइमिडीन, AZT, फॉस्फोकोनेट, उसके अलावा है डाइडिऑक्सीसाइटिडीन, उसके अलावा D40 यानी स्टेबुडिन मेडिसिन वो मेडिसिन है जो न्यूक्लियोटाइड बेस्ड है और ये क्या करती है, उसकी जो T4 सेल्स है उनकी डिस्ट्रॉइंग रेट है उसको लो कर देती है। RNA और DNA, RNA से DNA प्रोडक्शन की रेट है, ये मेडिसिन उसके इफेक्ट को भी क्या कर देती है, कम करती है। यानी जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की एक्टिविटी है उसको वीक करने के लिए ये मेडिसिन रेस्पॉन्सिबल होती है। कुछ अदर मेडिसिन जो प्रोटीएज डिस्ट्रॉयर है वो जैसे सेक्यूनेबिल, इन्वारेज, इंडोनेबिल, ये भी इसकी इन्फेक्शन रेट को क्या करती है, थोड़ा लो करती है। लेकिन जो ये मेडिसिन है वो 100% श्योरली इस चीज को क्या नहीं कर पा रही है, ब्लॉक नहीं कर पा रही है, पूरी तरह रिक्योर नहीं कर रही है। ये केवल उसके इन्फेक्शन रेट को, जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को ब्लॉक करने की प्रोसेस है, उसको स्लो कर देती है। ठीक है, तो ये थी मेडिसिन। फिर बात करते हैं वैक्सीन की। अभी तक परमानेंट कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ वैक्सीन पर रिसर्च चल रहा है, जैसे HIV, HIG, ह्यूमन इम्यूनो वायरस HIG, हाइपर इम्यूनो ग्लोब्यूलिन, हाइपर इम्यूनो ग्लोब्यूलिन बायोसिन, ये वो वैक्सीन है जिनको डेवलप करवाया गया है बट मेडिकली, बट एज ए कॉमर्शियल इनको अभी तक लॉन्च नहीं किया है क्योंकि इनका अभी तक टेस्टिंग कंप्लीट नहीं हुई है। तो चल रहा प्रोसेस, देखो कब डिक्लेयर होता है। लेकिन फिर भी अभी थोड़े दिनों पहले की बात है, 2008 की, अभी 2008 में जनरल
ऑफ वायरोलॉजी, जर्नल ऑफ वायरोलॉजी में एक रिपोर्ट सामने आई थी। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एल्बर्ट आइंस्टीन जो कॉलेज का जो ग्रुप है, उन्होंने जो साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, उन्होंने साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट सेल को प्रोड्यूस करने में एक पूरी से उन्होंने क्या पॉसिबिलिटी देख ली है। उन्होंने उसको कुछ प्रोड्यूस भी किया था और इससे ये एक चांस बन रहा है कि एचआईवी का श्योरली 100% ट्रीटमेंट निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि जो एचआईवी वायरस होता है वो टी लिम्फोसाइट को डिस्ट्रॉय करता है, और जब साइंटिस्ट की टीम ने इसी को प्रोड्यूस करने में अगर उन्होंने अचीवमेंट ले लिया है, अभी लेटेस्ट अपडेट इसके अंदर ये है कि ईयर 2008 में जर्नल ऑफ वायरोलॉजी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, मार्च 2008 में आई थी रिपोर्ट, उसके अकॉर्डिंग एल्बर्ट आइंस्टीन कॉलेज का जो ग्रुप है, साइंटिस्ट ग्रुप है, उन्होंने इसमें जो साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट सेल्स को प्रोड्यूस करने में उनको सक्सेस मिली है। और ये बहुत अच्छा इंटीग्रेशन है इस बात का कि एचआईवी जो वायरस होता है वो टी लिम्फोसाइट को डिस्ट्रॉय करता है, और जब लेबोरेटरी के अंदर इन्हीं टी लिम्फोसाइट को अपन प्रोड्यूस कर लेते हैं तो इसका ट्रीटमेंट श्योरली 100% हो जाएगा। तो अभी तक इसकी रिसर्च चल रही है कि कब वो कॉमर्शियल टाइप में मार्केट में अवेलेबल होती है, तो उसके बाद में एचआईवी का भी एक क्या होगा, परमानेंट वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी। तो तब तक उसमें प्रिकॉशन ही इसका एक ट्रीटमेंट है। तो यही इसकी वैक्सीन थी और अपडेट अपन ने लिया ही है इसका। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इसके। तो ये था इसका ट्रीटमेंट, जिसमें अपन ने ट्रीटमेंट में मेडिसिन और वैक्सीन दोनों की बात की। अब जो एड्स में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम जनरेट हो रही है वो है, इसके बारे में लोगों के अंदर बहुत सारे मैनी मिसकंसेप्शंस हैं, many misconceptions regarding the spreads of AIDS, but this disease is caused by common social contact like shaking hands, living in the same house, फिर बात करें playing, reading the book, या फिर बात करें working together या eating together, using the same toilet, coughing, sneezing, hugging, does not spread। ये सारे misconceptions हैं कि इन रीजन से डिजीज ट्रांसमिट नहीं होती। इफ मॉस्किटो, बीटल या अदर इंसेक्ट माइट्स आर बाइटन बाय एड्स, देयर इज नो चांस एड्स ट्रांसमिशन। सो दैट्स ओनली मिसकंसेप्शन, और इन्हीं मिसकंसेप्शन से जो पेशेंट के लिए लोगों में इम्यूनिटी है वो पूरी तरह से फिनिश हो गई है। एक्चुअल में इसी के रिगार्डिंग 1992 में इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइज हुआ है, इसका नाम है नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये वो डिपार्टमेंट है जो जितने भी इसके अकॉर्डिंग मिसकंसेप्शन है उनको सॉल्व आउट कर रहा है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए रेगुलरली जितने भी मिसकंसेप्शन होते हैं उनको सॉल्व आउट कर रहा है और लोगों को इसके लिए पूरी तरह से इन्फॉर्म कर रहा है, तो जिससे इस डिजीज को कंट्रोल कर सकें। बात करते हैं एड्स के प्रिवेंशन और इसको कंट्रोल करने के लिए पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड एड्स डे को सेलिब्रेट करते हैं, उसको करते हैं 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर ये वर्ल्ड एड्स डे के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं।
There are a number of ways whereby HIV can penetrate through blood vessels to reach its target population. It shows two different entities, both HIV and its main target cell, which is the CD4 lymphocyte. The virus has an outer layer, and the outer layer, as you see, contains a number of spikes. These spikes include the major glycoproteins of the virus that are responsible for direct interaction with the cell surface. You can also see the matrix core, which exists in the symmetrical shape of an icosahedron. You can see that structure of HIV is very, very complex. There is a lipid membrane, and from that lipid membrane you can see that the spikes protrude outward. These include the surface glycoprotein, which is GP120, as well as a transmembrane glycoprotein that is termed GP41. The matrix core, the capsid protein, and the nucleocapsid protein all underlie the outer layer of the virus. And finally, in the inner core, you see that there are two strands of viral RNA, which are associated with three of the enzymes that are essential for virus replication. These are the integrase, the protease, and the reverse transcriptase. This attachment stage clearly indicates how the GP120 is about to bind to its CD4 receptor. In fact, we know that there are other receptors as well that can be involved with HIV entry into target cells. We term these other receptors the co-receptors, and there are actually two of those. One of these is termed CCR5, and the other is termed CXCR4. And these are responsible, actually, for the entry of viruses into lymphocytes and macrophages, respectively. This is the process of co-receptor binding following the interaction of GP120 to the CD4 receptor, which is the major receptor for viral entry and penetration. And this binding event that involves GP120 to CD4 actually changes the shape of the GP120, and now this results in the exposure of a portion of the transmembrane glycoprotein GP41. And so GP41 is important in bringing the HIV virus much closer to the target cell, resulting ultimately in the fusion of the viral envelope together with the fusion of the cell membrane, and this then is essential in viral entry. The transformational change can take place within GP41 as a precursor event in this fusion process. It is essential to point out, therefore, that each of GP120, the CD4 receptor, the CCR5 or CXCR4 receptor, and GP41 are all essential elements in the process of viral entry into target cells. This is the actual fusion process whereby the outer surface of HIV, notably its envelope, can fuse with the CD4 cell membrane. And you can see that one of the consequences of this is the entry of the matrix core of the virus into the host cell cytoplasm. The matrix core can actually become uncoated, and this will result in the disintegration of this core and the release of the capsid inside the cytoplasm together with the genome of the virus, that means the viral RNA, as well as associated enzymes, which can now go to work to initiate the process of viral replication within the host cell. This viral RNA is now exposed in the host cell together with the enzymes, and the two coded viral RNA strands that represent the genetic makeup of the virus can now couple together with the reverse transcriptase enzyme. And in addition to this, the integrase enzyme and the protease enzyme of the virus are also released into the cytoplasm. At the same time, the viral nucleocapsid protein will begin to disintegrate at this stage, and this results in the exposure of naked strands of viral RNA. These naked strands of RNA will now undergo conversion into viral DNA, and this is a process that is mediated by the viral reverse transcriptase enzyme. This is an extremely important step in the viral life cycle because this is the point at which the drugs that block reverse transcription can begin to take effect.
It is the formation of a first strand of HIV DNA. And this results then from the reverse transcriptase enzyme being able to move along the viral RNA and read its sequence. And in the process, what we have is the assembly of a copy of viral DNA. As this takes place, the viral RNA actually becomes disintegrated by a different portion of the reverse transcriptase molecule than that which is involved in the copying of the genetic information for viral RNA into DNA. It shows the formation of the second strand of viral DNA. And this means that as the first DNA strand is completed, it now actually serves as a template or basis on which to copy a second strand of viral DNA. And this second strand of viral DNA that is made is actually complementary to the first strand that was made. This is likewise an essential step in viral replication, and this step as well can actually be inhibited by the reverse transcriptase inhibitors. The entry of the viral DNA into the nucleus is a very important process in the viral life cycle, and you can see the double-stranded HIV DNA migrating into the nucleus of the host cell. This is followed by the process which is termed integration. This process is mediated by yet another viral enzyme termed integrase, and what this enzyme does is actually to slice through the DNA of the host cell, permitting the viral DNA to be inserted at a variety of sites in the viral DNA of the host cell. And unfortunately, once this happens, it is fair to say that the cell has been infected for life. This is the transcription of HIV genomic RNA. What happens now is that the DNA which has been integrated is now called a provirus and can now be used to generate genomic RNA, which can serve as messenger RNA for the synthesis of viral proteins. In fact, the provirus of the DNA, as represented by viral DNA, may remain dormant over very long periods until the cell becomes activated. This, alas, is one of the most difficult issues that we have to contend with in terms of trying to deal with the HIV infection. Because once a cell has been infected by HIV, it is infected for life. This is the transcription of the viral messenger RNA, which is made from the proviral DNA. And as we said before, the viral messenger RNA is essential for viral protein synthesis. And you can see the construction of a number of different messenger RNA molecules of several different types. It now shows the migration of the viral RNA and of messenger RNA out from the nucleus back into the cytoplasm. And it is in the cytoplasm that we actually have the formation of viral proteins. This is how viral proteins actually get made, in view of the fact that ribosomes can move along viral messenger RNA molecules, and the formation of viral proteins will then ensue as a consequence of the juxtaposition of these viral messenger RNA molecules together with the ribosomes. And now, a very important event in the viral life cycle, notably, the viral proteins as they are made are actually first produced as precursor proteins that are not themselves active in any real sense. In other words, these precursor proteins are not actually able to function within the viral life cycle to give rise to finished virus products. What is required, rather, in order to get a virus that will be infectious, in order to reinitiate a new cycle of infection, is that the viral protease enzyme actually cuts these long precursor proteins or polypeptide chains into smaller individual subunits. And this process, in fact, continues even after new virus particles have formed and have budded off from the host cell. The process of viral assembly shows how the viral matrix will form to envelope the various protein segments and two strands of viral RNA. This is the stage at which the viral envelope glycoprotein complex that consists of GP120 and GP41 actually gets inserted into the host cell membrane. This stage reveals the very important process of budding, whereby an immature virus particle will bud out from the host cell membrane.
The process of viral protein cleavage by the protease enzyme is a part of viral maturation and will continue even after the budding has actually taken place. The last step in the virus life cycle is the maturation of new virus. The newly mature virus particle is now infectious and contains the various components associated with ability of the virus to initiate a new infection event. The new infection event will, by definition, involve the ability of this newly made virus particle to attach to a new, previously non-infected cell. And of course, this will require that each of the capsid core, the 2 nucleocapsid proteins, the 2 strands of viral RNA, 2 molecules of reverse transcriptase, 2 integrase molecules, and 2 protease molecules all be part of this newly assembled virus particle in order that a new cycle of virus replication can be reinitiated. तो ये था अपना आज का टॉपिक। तो इस टॉपिक में हमने एड्स की फुल फॉर्म देखी, फिर हमने HIV वायरस को देखा, फिर हमने उसके स्ट्रक्चर देखी, फिर हमने सिम्टम्स देखे, फिर हमने उसके प्रिकॉशन देखे, ट्रीटमेंट देखा। ये सारी चीज़ें आज हमने स्टडी की है। इन सब के PDF नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, वेलकम।